Hello, students. Today's topic is corporate communication. So, let us try to understand what is corporate communication. Corporate communication and communicative English, communication skills, these are the terms you are familiar with. Communication skills means you have to communicate, right? So, then you have to use words, body language, and all. So that is skills, that's a combination of number of skills which is to be acquired with the practice and all, right? Then communicative English means what English is used for writing purpose, commonly used for writing purpose, and situational English, right? And spoken part, it covers the spoken part. But corporate communication, so as name suggests that corporate communication professional creates and maintains a positive image of an organization. So purpose of corporate communication is maintain a positive image in an organization in the eyes of stakeholders, right? So those are the stakeholders. In front of them we have to have very good image, and that is why we create corporate communication. So basics of corporate communication. Corporate communication encompasses all the communication activities undertaken by an organization to correct with its various stakeholders, both internal and external. So, corporate communication is the communication which covers all activities which are done by organization, right, with its various stakeholders, with internal and external, right? So, for example, today we had meeting with the director. So, director told that we have to take care of children, of course, students. We have to take care of students, then faculty members, then non-teaching staff, right? Those who are the part of this unit or this institute. So we create one communication which makes everyone happy, internally or external. It is not just about marketing or public relations. It is strategic function that aims to build and maintain a positive reputation. Ultimately we have to create positive reputation, right? So that is foster strong relationship and achieve organizational objective. So positive relationship and strong relationship, right? Positive reputation and strong relationship. So what are the core principles and objectives? So one by one we will see that. First of all, reputation management, right? Reputation management, building, maintaining and projecting the organization's image and credibility. So what organization's image is there, so that we have to build, maintain and projecting, right? So first of all, that is image building, right? Then we have to uh, maintain, organize image of organization and protecting the image, right? And credibility, which should be maintained. So for reputation management we have to take care how can we maintain our reputation, how can we build our reputation, then maintain and then protect our reputation. Number 2, stakeholders engagement, effectively communicating with all groups that have an interest in the organization's success.
So stakeholders engagement, effectively communicating with all groups that have an interest in the organization's success, so that employees, customers, investors, media, community, and governor. You can take any example of any company. For example, if we take example of Tata Group, so they take care of everyone. So that is stakeholders engagement, means they should be engaged with the company, effectively communicating with all groups, right, that have an interest in the organization's success. So who is interested? Of course, employees, customers, investors, these all people, media, community, so these all are the stakeholders. So we have to make them engage with effective communication, right? So that is second one. That is this one. Then brand building. Brand building, reinforcing the organization's value, mission, and unique identity. So that we have to reinforce the organization's values, right? So that, for example, St. Paul is known for discipline, right? So that timely classes, right? And no ill words and all. So we have to maintain our values, mission, and unique identity, what we gain after long time, right? Then crisis communication, managing and mitigating negative publicity. So we try to manage or less, like uh, try to save negative publicity and potential damage during unforeseen event. So in future, what we have seen, that what we can image, that should be maintained. So crisis communication, suppose company is facing any kind of crisis, so then we have to, anyhow we have to try to maintain it, right? And try to uh, recover image, right? Negative publicity we should avoid, we should uh, create positivity, right? So that is crisis communication. Then internal cohesion, internal, fostering a shared understanding, vision, and sense of purpose among employees. So we have to, company uh, has to repeat, has to recall about understanding, vision, है ना, and say sense of purpose, why we are sitting together, why we are together, what's our purpose ultimately, to serve good products to the society, or suppose good services to the society or to the person. So then that is internal cohesion, means we have to maintain it. Then transparency and trust, very important point, right? So that is also part of communication, that communicating openly and honestly to build trust. So that transparency must be there. So whatever we talk, don't talk secretly. So that is open communication, honest communication to build trust with all stakeholders. And then strategic alignment. Strategic alignment means uh, strategic alignment, ensuring communication efforts support overall business goals and strategies. So strategic alignment means we have to ensure about communication efforts support overall business goals, right? So that is, and strategies, we कहते हैं अलग अलग मत भागो. So we cannot use our brain separately. We are together, so we have to walk together, we have to talk together this way. Okay, so what are the core principles? First is reputation management, stakeholder engagement,
organization success, है ना. Then brand image crisis communication, internal cohesion. Okay. Now internal cohesion, then transparency, very important, strategic alignment. These are the core principles and objectives. Now key areas or disciplines within corporate communication. What are the key areas? Media relations. Key areas is media relations, public relation, PR, right? So media relation focus building and maintaining positive relationship with journalists, reporters, and media outlets. We have to, otherwise there will be negativity for the company. Activities are ensuring press is or issuing press release and media kits, right? So we have to issue press release, and then organizing press conference and media uh, briefings. So then we have to organize press conference, and then we can put our points. Then responding to media inquiries, and suppose if media ask any question, we should not get irritated, instead we should respond properly, right? And then media monitoring and analysis. So then when we should monitor media, we should think that what media, through media, how we can, social media, any media, print media, right, electronic media, how can we put our point, how can we do marketing through media and all. Then facilitating interviews with companies spokespersons. So then we should facilitate interviews with the company spokespersons, right? So that is our responsibility to facilitate interviews. So with companies spokesperson, जो कंपनी के spokesperson, उनके साथ मीटिंग करवाना, इंटरव्यू करना, that is our responsibility. That's a part of corporate communication. Then developing media strategies for product launches, events and announcements. हर चीज़ बहुत नपे तुले and very cautiously we have to move. So then we have to prepare proper strategies for product launching, for events, and even for a small announcement, any announcement. But we have to take care of words, sentences, and everything. Then only we can come forward. So that is facilitating interviews, right? And that is that is developing media strategies. Okay. Now number one, we have seen that that's a number one, that is core principles, right? Number two, key areas and discipline with within corporate communication, right? So what are the key areas within corporate communication? Media release, right? So we have already discussed this, है ना? Now number three is that is investor relations. Who's those who are investing to our mutual fund, you must have heard, है ना? So then we have to take care of them. Focus company communicating with current and potential investors, right? So we have to communicate with current and potential investors, so that who are the investor, and then we have to take care of their them. And then financial analysis, we have to do analysis, and the financial media. So that is our focus, and our focus is on three. First is that's a customers or investors, current and potential investors, financial analysis, and the financial media. So that is investor relations. Then activities, preparing annual reports and quarterly earning statements. We have to prepare for record. Organizing investor calls and presentations. So then we have to organize investors calls, and presentation should be given.
Then responding to investors inquiry, don't get irritated, we have to respond, right? Then ensuring compliance and financial regulations, disclosure requirements. We are facilitator, so we have to ensure for compliance with financial regulations कि कहीं कोई घपला, कहीं बीच में कोई गड़बड़ तो शेनानिगन्स तो नहीं है, तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, और जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करना और केयर करना. फिर कम्युनिकेटिंग फिनेंशियल परफॉर्मेंस एंड स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन, तो हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी देखना पड़ेगा और स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन भी. नाउ क्राइसिस कम्युनिकेशन अभी हमने ऊपर देखा था. तो फोर्थ वन इज फोकस इज मैनेजिंग कम्युनिकेशन ड्यूरिंग नेगेटिव इवेंट्स. अगर हमारा इफ नेगेटिव इमेज इज देयर, समथिंग गोज रॉन्ग, सो देन वी हैव टू बी फोकस ऑन मैनेजिंग कम्युनिकेशन ड्यूरिंग नेगेटिव इवेंट्स. तो कोई नेगेटिव इवेंट्स है तो हमें कम्युनिकेशन करना पड़ेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्ट रिकॉल्स, स्कैंडल्स, नेचुरल डिज़ास्टर्स, है ना. अगर कोरोना आया था तो देन वी हैव टू कम्युनिकेट टू पीपल, राइट, टू मिनिमाइज रेपुटेशनल इमेज. तो उसको कम करने के लिए, बिकॉज वी आर कंपनी फेसिंग प्रॉब्लम, सो वी हैव टू स्टैंड विद दोज हु आर फेसिंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम और क्राइसिस. एक्टिविटीज़ क्या करेंगे इसमें? डेवलपिंग क्राइसिस कम्युनिकेशन प्लान्स एंड प्रोटोकॉल्स, तो उसको बनाएंगे, उसके प्लान्स बनाएंगे. आइडेंटिफाइंग एंड ट्रेनिंग स्पोक्स पर्सन, और हम उनको जो भी स्पोक्स पर्सन उनको प्रॉपर आइडेंटिफाई करके उनको ट्रेंड भी करना दैट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन. देन मॉनिटरिंग सोशल मीडिया एंड ट्रेडिशनल मीडिया फॉर क्राइसिस रिलेटेड मेंशंस. तो जो भी क्राइसिस चल रही है किसी भी तरह की, नेस्ले का एग्जांपल है, नेस्ले का ये जो आता है ना चाइनीज़ प्रोडक्ट मैगी, तो लोगों ने कहा नेस्ले में ये मिला वो मिला. कंपनी के बिहाफ में आप सोचो तो किसी को बदनाम करना या इस तरह से बोल देना, या सपोज करिए कभी कभी निकल भी सकता है, उसको बना के रखना, फिर से उसको इमेज ख़राब ना हो. सो टू अवॉइड डिटेरियोरेशन, राइट, सो हाउ टू मैनेज, तो वी हैव टू बी मॉनिटर्ड, है ना, विद सोशल मीडिया एंड ट्रेडिशनल मीडिया फॉर क्राइसिस रिलेटेड मोशन. तो हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हम पॉजिटिव कर सकते हैं. क्राफ्टिंग टाइमली एंड एक्यूरेट मैसेजेस फॉर वेरियस स्टेक होल्डर. आज कर दे नो procrastination, no delay, we have to create messages timely, right, for stakeholders especially. Then post crisis evaluation and learning, that's why this mistake was happened, what goes wrong, why people are saying negative for us, so we have to analyze and learn from the situation. Then next is reputation management and corporate social responsibility. So focus is proactively building and maintaining positive public image by demonstrating ethical behavior and social responsibility. So that is reputation management, है ना. तो reputation is very important. So positively proactively building and maintaining a positive public image. तो हमारी जो एक बहुत पब्लिक में अच्छी इमेज बनी है बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग एथिकल बिहेवियर एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो हमें वो करना है, समाज के लिए भी कार्य करना है, और एथिकली मॉरली वी हैव टू बी जेन्युइन. एक्टिविटीज़ के डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग CSR initiative, environmental sustainability. We can't do that like factories running and smoke, and also at the same time we should have forestation planting around our campus. Community involvement, we should involve community. Ethical sourcing, है ना, and then ethical sourcing are there. Then publishing CSR reports, so we have to publish, that's a CSR report, that is right. So that is a reputation
management and corporate social responsibility. So CSR report is corporate social responsibility. Then engaging in philanthropic activities, so philanthropic welfare for the society. So we have to engage. And then promoting diversity, equality and inclusion within an organization, not Jain or say Mohammedan or Sindhi or Punjabi or Christian, ऐसा नहीं है, सबको साथ लेके. और डाइवर्सिटी, वी हैव टू प्रमोट डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. देन नेक्स्ट है मार्केटिंग और कम्युनिकेशन. फोकस क्या है? सपोर्टिंग मार्केटिंग एंड सेल्स ऑब्जेक्टिव थ्रू वेरियस कम्युनिकेशन, है ना, चैनल, कम्युनिकेटिव चैनल्स. तो दैट इज़ मार्केट को सपोर्ट करना, सेल्स ऑब्जेक्टिव्स को, है ना. फिर वाइल डिस्टिंक्शन फ्रॉम ट्रेडिशनल मार्केटिंग, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन ऑफन वर्क्स क्लोजली एंड विद मार्कॉम. ठीक है, तो ये उनके साथ, इस कंपनी के साथ काम करती है. कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन क्या है? ब्रांड मैसेजिंग एंड प्रायर पोजीशनिंग. तो हमें ब्रांड मैसेज करना पड़ेगा, पोजीशनिंग, है ना. फिर एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल कैंपेन्स. देन कंटेंट मार्केटिंग, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, ये बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा. सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेबसाइट कंटेंट मैनेजमेंट, ये सब आता है मार्केटिंग में. फिर पब्लिक अफेयर्स एंड गवर्नमेंट रिलेशन. फोकस इज मैनेजिंग रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट बॉडीज़, पॉलिसी मेकर्स एंड रेगुलेटरी एजेंसीज. तो हमें पब्लिक अफेयर्स, पब्लिक गवर्नमेंट रिलेशंस बनाना है. तो हमें क्या, वी हैव टू मैनेज रिलेशंस विद गवर्नमेंट बॉडीज़, पॉलिसी मेकर्स, जो पॉलिसी बना रहे हैं मिले, और पॉलिटिकल पीपल, एंड रेगुलेटरी एजेंसीज. लॉबिंग इफेक्ट एक्टिविटी क्या करें? लॉबिंग एफर्ट्स करिए, ग्रुप बनाकर जाना. मॉनिटरिंग लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड देन एडवोकेटिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेस्ट, कम्युनिकेटिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्टांस एंड पब्लिक पॉलिसी इशू. और इस तरह से हमें सबको लेकर चलना है एक तरह से. की टूल्स और चैनल्स. फाइनली ट्रेडिशनल मीडिया सबसे बड़ा की टूल है ना. देन प्रेस रिलीजेज, बनाना टाइम टू टाइम, मीडिया एडवाइजरीज, है ना. देन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, इंटरव्यूज़ देना लेना. फिर फीचर आर्टिकल्स, है ना. फिर डिजिटल मीडिया कंपनीज वेबसाइट, है ना, टाइम टू टाइम यू हैव टू चेक. देन इन ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, ये सब, ब्लॉग, पॉडकास्ट, ये सब पे नज़र होना चाहिए. देन ओन मीडिया, एनुअल रिपोर्ट्स, ब्रोशर, न्यू लेटर्स, ये हमारा ओन मीडिया है. एंड देन इवेंट्स, टाउन हॉल्स, इन्वेस्टर डेज, राइट, प्रोडक्ट लॉन्चेस, CSR इवेंट, ऐसे इवेंट टाइम टू टाइम कराना पड़ता है. फिर डायरेक्ट कम्युनिकेशन, ईमेल्स के, मेमोज के, लेटर्स, फेस टू फेस मीटिंग. अब एसेंशियल स्किल्स फॉर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, एक्सेलेंट रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन, अच्छा कमांड होना चाहिए. एबिलिटी टू क्राफ्ट क्लियर, कंसाइज एंड कंपेलिंग मैसेजेस फॉर डाइवर्स ऑडियंस, है ना, सबके लिए एक अच्छा मैसेज हो. स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड अलाइनिंग कम्युनिकेशन एफर्ट्स, है ना. फिर रिलेशनशिप बिल्डिंग, नर्चरिंग स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद media employees, investors and other stakeholders. Crisis management, then regaining calm and effective under pressure, बहुत शांति से वो टफ टाइम निकालना पड़ता है. मार्केटिंग, क्विक डिसीजन एंड कम्युनिकेटिंग effectively during challenging situations. फिर मीडिया savvy होना ही पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग हाउ मीडिया वर्क्स, आइडेंटिफाइंग न्यूज़ वर्दी स्टोरीज एंड इफेक्टिवली, कैसे बनती है न्यूज़, कैसे इंगेजिंग विद जर्नलिस्ट, कैसे जर्नलिस्ट के साथ रेपो बनाना. फिर डिजिटल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करी, बताया आपको. रिसर्च एंड एनालिटिकल स्किल्स, है ना. तो दैट्स अ गैदर इंफॉर्मेशन, एनालाइज डेटा, यही रिसर्च है ना. एथिकल जजमेंट, एडरिंग टू द high ethical in standard and ensuring honest and transparency. तो
तो फाइनली व्हाट इज द रोल द कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डेवलप acts as the central hub for all organizational messaging. It works across functionally within various departments, HR and legal and all. Then to ensure consistent and coherent communication लगातार बना रहे, its head often a chief communication officer और VP जो होता है वो टिपिकली रिपोर्ट डायरेक्टली टू द CEO. तो CEO को रिपोर्ट करना अंडर स्कोरिंग द स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस कि क्या हुआ, कैसा चल रहा है. इन एसेंस कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन इज़ अबाउट टेलिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्टोरी. पूरे ऑर्गेनाइजेशन की स्टोरी को कैसे कोई हमें बाहर बताएगा हमारे बारे में, तो अच्छा होना चाहिए. इफेक्टिवली बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशन, सबसे अच्छे रिलेशन एंड प्रोटेक्टिंग इट्स मोस्ट वैल्यूबल एसेट. और बहुत हमारे असली मोस्ट वैल्यूबल एसेट इज़ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन. इट्स रेपुटेशन बहुत ज़रूरी है. इट इज़ अ डायनेमिक एंड इवॉल्विंग फील्ड दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल सक्सेस. तो ये कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है. अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं फिर से वीडियो बनाऊँगी. थैंक यू सो मच.